15% battery. Going further, I will have so I was talking about the recurrent pregnancy loss, most common cause of the uterine antiphospholipid syndrome, severe autoimmune disease are linked to the poor obstructed outcomes. The only main condition with the pregnancy loss is a diagnostic criteria for the disease. With 5 by 15% of the patients with the recurrent pregnancy loss have antiphospholipid syndrome. Most common immunological cause for RPL is APLA. Most common cause of first trimester recurrent abortion is idiopathic abortion. Most common cause of second trimester recurrent abortion is uterine causes. Then we have the antiphospholipid antibody syndrome, that is APLA. Antibodies are present. Most common antibodies is lupus anticoagulant. This is not coagulant, rather than it is thrombosis. एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम किसने बताया कि इसमें क्या होता है कि बॉडी में एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है. मोस्ट कॉमन कौन सी होती है? लूपस एंटीकोगुलेंट. ठीक है. एंटीकार्डियोलिपिन बी होती है. एंटीबॉडीज में बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन होती है. इसके कारण क्या होता है कि आर्टरीज और वीनस में ना थ्रोम्बोसिस होना शुरू हो जाता है इन द प्लेसेंटल ब्लड वेसल्स. जौन सा प्लेसेंटा की ब्लड वेसल्स होती है ना, उसके अंदर आर्टरीज और वीनस में थ्रोम्बस होना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ द अप्ला. एंड जौन सी इसके कारण क्या होगा, क्योंकि प्लेसेंटा की ब्लड वेसल्स हो रही है तो प्लेसेंटा का जो ब्लड सप्लाई जा रहा है वो डिक्रीज हो जाएगा. डिक्रीज भी हो सकता है, स्टॉप भी हो सकता है. अगर डिक्रीज हो जाएगा तो इसके कारण IUGR हो जाएगा. अगर स्टॉप हो जाएगा तो ऑब्वियसली डेथ हो जाएगी. इट कुड बी अबॉर्शन, IUD, और इट कुड बी स्टिल बर्थ. ठीक है. एंड इट कुड ऑल्सो लीड टू PIH, दैट मदर वुड ऑल्सो गेट अफेक्टेड if this case happens, that is antiphospholipid antibody syndrome, and the blood is not going to placenta, so it would go there. Then the size of placenta reduces uteroplacental insufficiency. इतना याद रख लेंगे, मोर द साइज ऑफ प्लेसेंटा मोर इज द यूट्रोप्लेसेंटल इंसफिशिएंसी. डायग्नोसिस अगर हम देखेंगे अपला का डायग्नोसिस हम कैसे बताएंगे, तो अपला का डायग्नोसिस जो होता है रिवाइज एंड मॉडिफाइड सपोर्टिव स्टडी है, ये ज़्यादा उसमें मेडिसिन में ज़्यादा आएगा. दैट क्लिनिकली क्या होता है कि आर्टीरियल वीनस थ्रोम्बोसिस होने शुरू हो जाते हैं. मोर देन 3 लॉसेज इन 10 वीक्स होता है. रिकरेंट लॉसेज ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब फर्स्ट ट्रिमेस्टर में बहुत सारे अगर फर्स्ट ट्रिमेस्टर में बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी लॉसेज हो रहे हैं, दैट मीन्स अप्लाई है. ठीक है. और हम देख रहे हैं कि थ्रोम्बोसिस बन रहे हैं आर्टीरियल और वीनस. ठीक है. मेरे दिमाग में आना चाहिए कि अपला हो सकता है. अगर मैं देख रही हूँ कि मोर देन 1 लॉस इन मोर देन 1 वीक ऑफ मॉर्फोलॉजिकली नॉर्मल फीटस आफ्टर फर्स्ट ट्रिमेस्टर, मतलब मैं देख रही हूँ कि आफ्टर 10 हफ्ते के बाद वो फीटस एकदम मॉर्फोलॉजिकली नॉर्मल है, पर फिर भी उसकी डेथ हो गई. देयर शुड बी सम थिंग रिलेटेड टू द ब्लड सप्लाई विच गॉट कट ऑफ बिकॉज बेबी वॉज नॉर्मल. देन उसके बाद प्रीटर्म डिलीवरी की अगर हम बात करें, टू सिवियर PAH एंड यूट्रोप्लेसेंटल, एटलीस्ट 1 प्रीटर्म डिलीवरी सेकेंडरी टू सिवियर PAH एंड यूट्रोप्लेसेंटल insufficiency. If you are talking about the lab criteria, then presence of lupus anticoagulant antibody, presence of IgM and IgG anticoagulant antibody, presence of beta 2 microglobulin antibody on 2 occasions 12 week apart. You have to do it. Lab criteria, that is presence of the lupus anticoagulant antibody, presence of IgM, IgG anticoagulant antibody, presence of beta 2 microglobulin antibody on 2 occasions 12 weeks apart. अगर हम लैब क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें कहते हैं कि लूपस से एंटीकोगुलेंट होते हैं. पहली बात तो मुझे लूपस एंटीकोगुलेंट मिलेगा, एंटीकार्डियोलिपिन बी मिलेगा. ठीक है. और क्या मिलेगा? और बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन मिलेगा. ठीक है. इसमें APTT प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है और प्रोथ्रोम्बिन टाइम जौन सा होता है वो APTT प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है. APTT. ठीक है. और जब मैं कर रही हूँ तो 2 ओकेजन्स पे करना है 12 वीक्स अपार्ट. ठीक है. 12 वीक्स 3 महीने बाद करूँगी तब भी मुझे एंटीकोगुलेंट लूपस एंटीकोगुलेंट एंटीबॉडीज़ मिलेंगी और IgM IgG एंटीकोगुलेंट एंटीबॉडीज़ मिलेंगी. एंड बीटा 2 उसमें था बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन 1, बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़ मिलेंगी. मतलब कोई एंटीबॉडीज़ होती है जो बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन या ग्लाइकोप्रोटीन, यहाँ पे माइक्रोग्लोबुलिन ग्लाइकोप्रोटीन पता नहीं इसका एग्जैक्ट नाम क्या है. 2 चीज़ें जो हमेशा याद रखनी है, लूपस एंटीकोगुलेंट होगा एंटीबॉडी और एंटीकार्डियोलिपिन एंटीबॉडी होगी.
लूपस एंटीकोगुलेंट एंटीबॉडी एंड एंटीकार्डियोलिपिन एंटीबॉडी होगी, और बीटा 2 कोई प्रोटीन होगा उसके अगेंस्ट नहीं होगी, ठीक है। ये अगर रसल वाइपर वेनम है तो क्लॉटिंग टाइम प्रोलॉन्ग हो जाता है। ये कहाँ से आ गया? आगे चलते हैं। मैनेजमेंट ऑफ प्लग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं एस्पिरिन की। एस्पिरिन क्या करती है? प्रिवेंट करती थी थ्रोम्बोसिस को। हाँ, सबसे पहले अगर पेशेंट मेरे पास आया अप्लाई, ठीक है, नॉर्मल है प्रेगनेंसी उसकी, पर अचानक की ब्लड सप्लाई कट हो जाती है, कुछ है ऑटो एंटीबॉडीज के कारण, जिसके कारण ब्लड सप्लाई जो फीटस को नहीं जाती थी, तो मैं क्या करूँगी, मैं उसको एस्पिरिन दूंगी। मुझे पता है क्योंकि एस्पिरिन जो थ्रोम्बोसिस को प्रिवेंट करेगी तो ब्लड सप्लाई कट ऑफ नहीं होगी या डिक्रीज नहीं होगी, ठीक है। तो पहले तो मैं लो डोज एस्पिरिन से स्टार्ट करूँगी, दैट इज़ 5200 mg। मैं इसको कहूँगी कि 5200 mg एस्पिरिन ले। मैं देखना चाहती हूँ कोई थ्रोम्बस वगैरह अगर है भी तो नहीं बनना चाहिए, ठीक है। एंड अगर मुझे पता है कि उस बंदे में बहुत ज़्यादा अबॉर्शंस है, हिस्ट्री ऑफ अबॉर्शन बहुत ज़्यादा है, तो मैं ये करूँगी नाउ द बेबी नाउ शी इज़ गेटिंग प्रेगनेंट, तो मैं एस्पिरिन एज सून एज पॉसिबल उसकी स्टार्ट कर दूँगी। और थ्रू आउट प्रेगनेंसी में कहूँगी तूने एस्पिरिन लेनी ही लेनी है, क्योंकि मुझे पता है तेरे अंदर एप्ला का है कुछ फीचर, तो यू हैव टू टेक द एस्पिरिन सो दैट इट वुड प्रिवेंट एनी थ्रोम्बोसिस। एंड स्टॉप कब करनी? थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, ओनली 4 to 6 days बिफोर लेबर। जब मुझे पता है कि नाउ इट्स अ टाइम फॉर द बेबी टू डिलीवर, देन ओनली आई कट ऑफ द एस्पिरिन, अदरवाइज नॉट। एंड सेकेंडली आई ऑल्सो गिव द हेपारिन। हेपारिन इज नो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन और अनफ्रैक्शनेटेड हेपारिन, एंड it should only be started once you confirm that yes, it is intrauterine pregnancy. And one thing I also learned about the pregnancy is in the starting you will during the starting you are giving during the starting of pregnancy you are giving low molecular weight heparin, then continuing the pregnancy you will give warfarin, and after the delivery you will give low molecular weight heparin. So why are you changing from warfarin to heparin? इसका आंसर मुझे भूल गया, बट याद रखना, ठीक है। एंड यहाँ पर ये है कि अगर उसको अपला सिंड्रोम है तो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी में उसको एस्पिरिन प्लस हेपारिन दूंगी, ठीक है। लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन, अनफ्रैक्शनेटेड हेपारिन स्टार्टेड ओनली आफ्टर द, और ये मैं तभी स्टार्ट करूँगी जब मुझे पता है कि हाँ भाई ये इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी है। अगर ये कहीं और भी हुई तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। एंड थ्रू आउट द प्रेगनेंसी देनी है, एंड आई शुड स्टॉप एट द ऑनसेट, जब मुझे पता है कि हाँ भाई अब लेबर होने वाली है, अब कोई चक्कर नहीं है, बेबी हेल्दी है, ग्रो हो चुका है, अब कभी किसी भी टाइम वो आ सकता है, उस टाइम पर मुझे इनको रोकना है, ठीक है। एंड अगर मुझे देखना हो कि उसके पहले भी बहुत ज़्यादा प्रीटर्म लेबर हुए हैं तो ओनली एस्पिरिन देनी है, लो डोज एस्पिरिन, स्टार्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि बेस्ड अपॉन द क्राइटेरिया ऑफ द प्रीटर्म लेबर आपको सिर्फ एस्पिरिन ही देनी चाहिए 5200 mg, 5200 mg। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हम वारफेरिन की बात करें तो इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द प्रेगनेंसी बिकॉज इट इन क्रॉस द प्लेसेंटा। ओके, सो वी आर नॉट गिविंग वारफेरिन, रिमेंबर दैट। एंड लिमिट द विटामिन के एक्टिविटी इन द फीटस। और अगर विटामिन के एक्टिविटी कम हो गई तो उसके कारण क्या होगा? ऑस्टियोकैल्सिन नहीं, विटामिन के फॉर कार्बोक्सिलेशन, तो विटामिन के कम है, ऑस्टियोकैल्सिन कम है, उसकी वजह से बोन और कार्टिलेज जो उनसे बनेंगे, उनकी कोई डिफॉर्मिटी आ जाएगी, तो उस वजह से वारफेरिन एम्ब्रियोपैथी हो जाती है। और इस चक्कर में स्टिपल्ड एम्फाइसिस हो गए, नेजल हाइपोप्लेजिया, लिम्फ हाइपोप्लेजिया, ये सारी चीज़ें होती हैं, जिसके कारण अगर हम एक्सरे वगैरह कोई देखेंगे ना तो वो कॉन्ड्रोडिस्प्लेजिया पंक्टा की तरह, एक्स लिंक डिजीज़ की तरह एक्ट करेगा। ओके, सो बोन और कार्टिलेज डिफॉर्मिटी हो जाएगी जैसे वारफेरिन। ओके, सो सबसे पहले तो ये उसने बताया है कि जो मैं पहले सोच रही थी कि ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता। हम प्रेगनेंसी में हेपारिन को ही इम्पोर्टेंस देते हैं, वारफेरिन को नहीं देते। क्यों? क्योंकि वारफेरिन में क्या था, अगर वारफेरिन आ गया तो विटामिन के से कम हो जाएगा, विटामिन के अगर कम हो गया तो उससे बोन्स और कार्टिलेज की डिफॉर्मिटी हो जाएगी, ऑस्टियोकैल्सिन कम हो जाएगा, और एक कंडीशन आ जाएगी जिस कंडीशन का नाम है वारफेरिन एम्ब्रियोपैथी। वारफेरिन एम्ब्रियोपैथी में क्या होगा? सबसे पहले तो क्या होगा कि जो से लिम्स है उनका हाइपोप्लेजिया, नेजल का हाइपोप्लेजिया एंड स्टिपल्ड एपिफाइसिस होंगे। सबसे पहले तो जो सी नाक और लिम्स होंगी ना वो हाइपोप्लेजिया हो जाएगा, लिम्स हाइपोप्लेजिया, नेजल हाइपोप्लेजिया एंड स्टिपल्ड एपिफाइसिस, जो से एपिफाइसिस होंगे वो स्टिपल्ड हो जाएंगे, और इस वजह से इसको कहते हैं वारफेरिन एम्ब्रियोपैथी, ठीक है। और ये एक कंडीशन को रिजेंबल करता है जिसको हम कहते हैं
कॉन्ड्रोडिस्प्लेजिया पंक्टाटा। कॉन्ड्रोडिस्प्लेजिया पंक्टाटा ये कंडीशन को रिजेंबल करता है जिसका नाम है कॉन्ड्रोडिस्प्लेजिया पंक्टाटा, और ये है एक एक्स-लिंक्ड डिजीज, कॉन्ड्रोडिस्प्लेजिया पंक्टाटा एक्स-लिंक्ड डिजीज। एंड अगर हम सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस की बात करें तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस इज पेनलेस सडन डायलिटेशन ऑफ इंटरनल लॉस। सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होगा, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो जाएगा और एक्सपल्शन ऑफ द फीटस हो जाएगा। अगर हम etiology की बात करें तो इट इज़ कंजेनिटल और एक्वायर्ड इज मोस्ट कॉमनली forcible dilatation of the cervix. Cervical surgeries could be there, and the least chances is cryosurgery. You have to do it. Okay, cervical incompetence most common cause of the second trimester recurrent pregnancy loss. अगर वो बात कर रहे हैं अपला की, राइट, तो अपला जो सा होता है उसने बेसिकली बताया नहीं, तो ये भी सेकेंड ट्राइमेस्टर लॉस ही होता है। ओके, अपला का बेसिकली उसने बताया तो नहीं है कि स्पेसिफिकली फर्स्ट ट्राइमेस्टर या सेकेंड ट्राइमेस्टर होना चाहिए। बेसिकली ये बाद में भी हो सकता है, उसके बाद में भी हो सकता है, पर अगर रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेज हो रहे हैं तो अपला उसका वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉज है, याद रखना, ठीक है। अपला इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेज, एंड हम उसमें हेपारिन देंगे, ना कि वारफेरिन। अगर हम वैसे बात करें कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, जब सेकेंड ट्राइमेस्टर जब से अप्लाई है उसका कोई फिक्स डेट नहीं है कि वो फर्स्ट में होगा या सेकंड में होगा, वो पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, उसके बाद भी हो सकता है। मतलब वो जनरलाइज सी कंडीशन उसने दी है कि अगर 3 से ज़्यादा पहले हो रहे तो हम सोच सकते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत सारे हो गए हैं, सेकंड में भी हो सकता है, ठीक है। बट जो सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस है वो मोस्ट कॉमन कॉज होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी लॉस होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि सडन पेनलेस डायलिटेशन होनी शुरू हो जाती है सर्वाइकल लॉस की सेकेंड ट्राइमेस्टर में। उसके कारण क्या होता है कि रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो जाता है, एक्सपल्शन ऑफ द फीटस हो जाता है। तो पहले ही जो उनसे इंटरनल लॉस होती है वो हमारी खुल जाती है और उस वजह से बेबी आउट होना शुरू हो जाता है, एंड देयर विल बी रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन्स, ठीक है। etiology की अगर हम बात करें तो इट कुड बी कंजेनिटल और एक्वायर्ड, एंड एक्वायर्ड इज द मोस्ट कॉमनली दैट इज फोर्सिबल डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स, ठीक है, DNC। सर्वाइकल सर्जरी की बात करें तो लीस्ट चांसेस इज नोन एज क्रायो सर्जरी, ठीक है। कंजेनिटल एंड एक्वायर्ड, कंजेनिटल और एक्वायर्ड दो तरीके होते हैं। एक्वायर्ड में क्या होता है कि फोर्सिबल डायलिटेशन होती है सर्विकल सर्वाइकल सर्जरी से जैसे हम कराई होती है, ठीक है। एक बंदे में 2 तरीके से हो सकते हैं और कि उसके सर्वाइकल सर्कलाज सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी हो। सबसे पहले तो ये कि उसने कोई उसको पहले से ही ऐसे कंजेनिटल ही है उसका ऑस इनकम्पिटेंट है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि एक्वायर्ड है। एक्वायर्ड कैसे हो सकता है, जैसे उसने फोर्सिबली डायलिटेशन की हुई है सर्विक्स की, ठीक है, या उसको सर्वाइकल सर्जरीज है, लीस्ट चांसेस है जैसे क्रायो सर्जरीज।
ठीक है। तो ये हो गया कि अगर हम फोर्सफुली इसको डायलेट करें और जैसे डायलिटेशन क्यूरोटाइज की हुई है या फिर उसने भी सर्जरी कराई हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे हम जाते हैं टाइम फॉर सर्कुलाज। तो टाइम फॉर सर्कुलाज की हम बात करें तो इट इज़ 14 to 24 वीक्स एंड 14 to 24 वीक्स के बाद कैन नॉट डू आफ्टर 24 वीक्स। टाइम फॉर सर्कुलाज कौन सा होता है वो हमें 14 से 24 वीक्स के अंदर अंदर ही करना होता है इन सेकेंड ट्राइमेस्टर। अगर उसके बाद किया तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। एंड टाइम टू रिमूव द सूचर इज व्हेन वी नो दैट द बेबी इज टोटली फुल्ली ग्रोन, दैट इज 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी और एट द ऑनसेट ऑफ द लेबर। अगर हमें अर्लियर रिमूवल करना है दैट इज रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, प्री टर्म लेबर और फीटल डिस्ट्रेस। व्हाट आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशंस फॉर द सर्कुलाज? Contraindication for circulars, suppose the membranes are ruptured. Now why baby would be coming out as early as possible, so there's no need for circulars. If the cervix has already dilated more than 4 centimeter, then there's no uh, use of doing it. Then the presence of gross anomaly, if you are knowing that fetus is not normally growth, then vaginal bleeding is present, there's something fishy, you should not close the door. And if any pelvic infections is present, and if you know that if it is placenta previa, then it is a relative contraindication, but not that much. But placenta previa is also a relative contraindication because it is lying to the internal os and we have to close the internal os. It is a kind of relative contraindication. So if if it is already dilated 4 centimeter, if it is a pelvic infection, if it is intrauterine death, or if the gross anomaly of the fetus is there, if the membranes have already ruptured, if there is vaginal bleeding there, if there is any complication around the uterus, anything is not normal around the uterus, you will not close it, okay. And placenta previa is also a relative contraindication. If we talk about the type of abortions, we have 5 type of abortion. First is a threatened abortion, in which what happens, there is spotting is present, and on per vaginum PA examination, we'll see that the height of fetus is equal to the height of gestation. This is threatened, okay. And the process has begun, but it could be reversed, okay. The process of of termination of pregnancy or abortion process has begun, but it could be reversed, right. Abhi it is period of gestation is equal to height of the uterus, and supporting per vaginal is present, and internal os is closed, and on ultrasound we see only reason is pregnancy is going normally, everything is normal, but you see a light spotting of per vaginum, then you can say this is a threatened pregnancy, threatened abortion. Secondly, if you see that the height is equal to period of gestation, and suddenly there is bleeding and there's pain, so this is inevitable. So it was going normal, but suddenly you are seeing bleeding and pain, and fetal dead fetus is there, and there is no cardiac activity. Inevitable, it has started and it has happened, now it is inevitable, because the fetal cardiac activity is also not present, there is bleeding, there is pain, although the height is equal to the gestation period, but the death has occurred. Now nothing could be done, the fetus is not live and cannot be reversed. There's an incomplete abortion. What happens? Incomplete abortion, there are products of conception which have come out, and there are
there is bleeding, there is pain, and there's no cardiac activity, and fundal height is also less than that. And when you check the internal os is open, and products of conception are also coming out. So incomplete abortion, that it has started but it has not yet completed. We can see the products of conception which are coming out. Then we have a complete abortion, in which the entire process of abortion has taken place, and the product of conception are out. There is pain plus there is bleeding, or it might have stopped bleeding, and it has completed on its own, and the height of the uterus is less than the period of gestation. And if we take about the internal os is also closed also. Okay, so internal os is also closed. Everything has happened, baby is out, and you see no fetal activity. Height of gestation, height is also less, and the products of conception has gone. Bleeding could be there, bleeding could have been stopped, and internal os is closed. सो कंप्लीट मतलब सब कुछ हो के और वो बंद भी हो गई अब इंटरनल लॉस, ठीक है. एंड देन वी हैव द मिस्ड अबॉर्शन. व्हाट डू यू मीन बाय मिस्ड अबॉर्शन? मिस्ड अबॉर्शन मतलब उस लेडी को पता ही नहीं चला. ब्राउनिश वेजाइनल डिस्चार्ज आ रहा है, डेड फीटस इज प्रेजेंट बट पेशेंट इज अनअवेयर, राइट. She thinks that the baby is alive, but the baby is not alive, it is dead inside. And when you check the cardiac activity, there's no cardiac activity. When you check the fundal height, it is less, and when you check the internal os is also closed. So these are the feature, and फिर हमें पता चल गया कि मिस्ड अबॉर्शन है, ठीक है. अब हम एंटी डी प्रोफिलेक्सिस इन RH नेगेटिव, ये एक नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर हमें ये पता लग जाए कि जो सी फीमेल है वो RH नेगेटिव है, तो ये तो हमें पता ही है एज ए गायनेकोलॉजिस्ट आई नीड टू गिव एंटी डी प्रोफिलेक्सिस, ठीक है. एंटी डी प्रोफिलेक्सिस इन RH नेगेटिव फीमेल हु हैड अबॉर्शन, ठीक है. ऑल्दो she had aborted her baby, but I know that she is RH negative, so she should be given that. And then the period of gestation when the abortion occurs, if it is less than 12 weeks, the dose is 50 microgram, given in all types of abortion except the threatened abortion and the complete abortion. And if it is more than 12 weeks, then dosage is equal to 300 microgram, given all types of abortion including threatened and complete. Okay, so as a gynecologist, how will you decide that how much dose of anti-D prophylaxis has to be given in the RH negative? So first of all, you will see that the period of gestation when the abortion occurred, if it was less than 12 weeks, if it was in first 3 months, right, so I will give the dose 50 microgram, ठीक है, in all types of abortion except threatened abortion and complete abortion. Because in threatened abortion in threatened abortion I know that baby is still there and I can reverse it. And in the second one is the complete abortion, that you know that the baby has died, and now everything is closed and everything has been done, it's just complete process has been completed. In that cases we do nothing, rest all the abortion, inevitable abortion, missed abortion and incomplete abortion, we are giving the dosage of 50 microgram. But in these 3 abortions, if you see that it has crossed the 12 weeks, after 12 weeks the abortion has occurred, like between 12 to 20 weeks, then we will say that given all types of abortion, then we will say okay that the dosage is 300 microgram. But listen, here is also one new thing, that it is given in all types of abortion. Then the doubt arises, why not in the first 12 weeks we are giving it in the complete abortion? Threatened, I have understood that threatened abortion, it's like pregnancy is still going on. No, there has to be something. Okay, right now just remember that dose is 50 microgram for only 3 pregnancies if it is less than 12 weeks. But if it's more than 12 to 20 weeks, then you have to say that yes, anti-D prophylaxis is must there for the mother in all kind of pregnancy, even it is threatened, even it is missed, inevitable, complete,
or incomplete, right? So we are now we know, okay, a lady comes to me and she tells me that it is a baby uh, which I'm not knowing, it's a case of rape, or it's a case of something that on I know as a gynecologist that this is not right and this should not have been done, and I have the right to do the MTV, right? So let's know something about the MTV, that is medical termination of pregnancy, that was passed in 1971 and came into action in 1972. MTP was done only up to 20 weeks of pregnancy, and if MTP is done at less than 12 weeks, that means within first 3 months, it is known as a single doctor opinion is required, and she can carry forward the MTP. But if it is done more than 12 weeks, then two doctor opinion is needed, two doctors opinion is required, and we need a consent for MTP. If the female is more than 18 years, then her consent is needed, and husband consent is not required. But if the female is less than 18 years or is not mentally sound, if it is less than 18 years or is not mentally sound, then written consent of the parents or the guardians is required. But if it is more than 18 years, then husband consent is not required. Only the female can go and say, listen, I want to get the baby aborted. Okay, it's the female's choice, it's her body, she can decide it on her own. Okay, so MTP can be done by the MBBS doctor, and at least 20 who has assisted at least 25 cases of the MTP, and should be or the second one is resident in obs and gynae for 6 months. It could be done by degree in gynecology, that is MD, or it could also be done by diploma in gynecology and obstetrics, that is DGO. So MTP can be done by at least अगर MBBS डॉक्टर ने करना है तो उसके 25 केसेस ऑफ MTP होने चाहिए. दूसरा एक MD डॉक्टर कर सकता है. तीसरा एक रेजिडेंट कर सकता है जिसने 6 महीने MTP पे लगाए हैं और ऑब्स एंड गाइन ड्यूटीज़ लगाई हैं. एंड चौथा एक DGO भी कर सकता है, एक MD भी कर सकता है. Then उसके बाद MTP can be done in, it can either be done in a government hospital or it can be done in a private hospital which is approved by the government. And if we talk about the indication, what could be the indication? Yeah, this was I was talking. A female can present to you like with the maternal factors or with the fetal factors on humanitarian grounds, on social grounds, like. So what could be the things? First of all, you see that the maternal, that मदर को बहुत हार्म है अगर बेबी पैदा हो तो, ठीक है. दैट इज़ क्लास 3 हार्ट डिजीज़ और क्रॉनिक रीनल डिजीज़ और मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन, एनी काइंड ऑफ सिकेट्रिक इलनेस. मदर इज़ नॉट ठीक, इसमें क्या होगा, मदर की कोई हार्ट डिजीज़ है, मदर का कोई ब्रेन की बीमारी है, कोई उसको सिकेट्रिक इलनेस है, कोई उसको मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन है, ठीक है, मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन है. एंड अगर उसको क्रॉनिक रीनल डिजीज़ है, अगर उसको क्रॉनिक रीनल डिजीज़ है, अगर उसको कोई ब्रेन की प्रॉब्लम है या कोई हार्ट की प्रॉब्लम है या सांस की प्रॉब्लम है, कोई हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, तो इन 3 चीज़ों में मैं देख सकती हूँ कि हाँ मदर की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो आई शुड अवॉइड द लेडी गेटिंग प्रेगनेंट राइट नाउ. सेकेंड चीज़ है, इफ़ आई नो द fetus is not ground, I know there's any abnormality of the fetus, like there is a radiation exposure, there is a teratogenic substance or a drug exposure. The mother had rubella, and I know it could lead to congenital rubella syndrome, it could lead to mental retardation, microcephaly, macrophthalmia, congenital cataract, congenital heart disease, sensorineural hearing loss. All these things could be there, congenital rubella syndrome. Then thirdly, on humanitarian ground, I know this is a product of rape. And fourth, on social ground, like the female comes from a very low socio-economic background,
And the second is failure of contraception. If female is from very low socioeconomic background, like she had 4 or 5 babies and now she doesn't want to go further. I saw it once, abortion. The baby was very small. But I was not sure that whole of the products of conceptions have been removed or not removed. Like, how do you know that yes, uterus is completely empty and complete removal of products have been done? Okay. Then I'll repeat all the 4 points again. It could be maternal cause, fetal cause, it could be a humanitarian, or it could be a social cause, right? maternal cause, maternal का दिमाग ख़राब है, दिल ख़राब है, सांस लेने में हाइपरटेंशन है या उसका कोई क्रॉनिक रीनल डिजीज़ है. फीटस की ग्रोथ ख़राब है, उसके ड्रग एक्सपोजर, रेडिएशन एक्सपोजर, टेरोजेनिसिटी और कोई रुबेला हो गया, टॉक्सिक रुबेला सिंड्रोम. सो ये चीज़ें. और एक होता है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, ये इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ रेप. फोर्थ होता है सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, अगर उसका सही नहीं है, सोशली वो सही नहीं है, या फिर दे यूज़ द बैरियर मेथड और कॉन्ट्रासेप्टिव्स बट इट जस्ट फेल्ड एंड इट्स जस्ट they didn't want the baby, it just happened, right? And then we come to methods of MTP. Methods of MTP we know it's first trimester abortion and second trimester abortion. फर्स्ट ट्रिमेस्टर अबॉर्शन वी नो, फर्स्ट ट्रिमेस्टर अबॉर्शन कब तक होगा? फर्स्ट ट्रिमेस्टर अबॉर्शन होगा 13 वीक्स एंड 6 days. सेकेंड ट्रिमेस्टर अबॉर्शन कब होगा? अप टू 14 वीक्स टू 20 वीक्स, राइट? सो फर्स्ट ट्रिमेस्टर up to 13 weeks. सो फर्स्ट ट्रिमेस्टर में हम कौन सी ड्रग दे सकते हैं? हम दे सकते हैं मीसोप्रोस्ट, मिफेप्रिस्टोन, मिथोट्रेक्सेट. मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन करते हुए डूइंग यूजिंग मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन सिरिंज, सेक्शन इवैक्यूएशन, कार्बन कैनुला. मेडिकल अबॉर्शन कर सकते हैं. मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन जैसे हम उसको मेंसेस दे सकते हैं, प्रोजेस्टेरोन वगैरह, उससे उसके मेंसेस कंटिन्यू हो जाएंगे. और वो done using menstrual regulation syringe. Okay, it is done using menstrual regulation syringe के साथ. Then third, we can use it by the common cannula, we suck out the baby. And manual vacuum and aspiration, dilatation and curettage. Basically drugs के साथ, menstruation के साथ, dilatation and curettage, suction and evacuation, and manually खींच लेंगे बेबी को बाहर. जो सेकंड होंगी उसमें पहले ड्रग्स होंगी. जो सी फर्स्ट वाली ड्रग्स हैं वो कौन सी है? मीजोप्रोस्ट एंड मिफेप्रिस्टोन. मीजोप्रोस्ट एंड मिफेप्रिस्टोन, ये याद रखना, पिछली बार भी आई है पेपर में. मीजोप्रोस्ट एंड मिफेप्रिस्टोन, प्रोस्ट वाली और टोन वाली, मिफेप्रिस्टोन एंड मीजोप्रोस्ट, ठीक है. एंड सेकेंड ट्रिमेस्टर में कौन सी होती हैं? सेकेंड ट्रिमेस्टर में आती हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, सक्शन इवैक्यूएशन, extra amniotic ecatherine, intra-amniotic installation of hypertonic solution, and hysterotomy. Listen here, we are having different methods. First of all, we can do it by the drug, that is like the prostaglandins, and we can give PGF2, PGE2, PGE1, PGE2 analog like gimiprost, dinoprost, mesoprost, carboprost. Okay, so basically mesoprost here is also a prostaglandin analog, right? So we can give prostaglandin analog 1 to F and उसके analogs जैसे we can give the carboprost, dinoprost, mesoprost, gimoprost. जितने भी prost हैं वो actually में prostaglandin है. Prostaglandin is a prost. Okay, so the prost is actually prostaglandin. Okay, so then we come to prostaglandin, then we go to the suction evacuation.
एक्स्ट्रा पहले तो हम ड्रग्स देंगे, उसको सकआउट कर सकते हैं, फिर हम क्या करते हैं सोल्यूशन दे सकते हैं, कौन सा हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। दूसरा कौन सा सोल्यूशन दे सकते हैं, एक्स्ट्रा एमनियोटिक इकैथेड्रिन दे सकते हैं, हम एक्स्ट्रा एमनियोटिक इकैथेड्रिन दे सकते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन दे सकते हैं, हम सक्शन इवैक्यूएशन कर सकते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन कर सकते हैं, या फिर हम हिस्टेरोटॉमी कर सकते हैं, ठीक है। हम मतलब सर्जरिकल से करके यूट्रस खोलेंगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बाहर निकालेंगे, हिस्टेरोटॉमी। एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द बेस्ट मेथड यूजिंग MTP, इफ़ यू आर टॉकिंग द बेस्ट मेथड less than 7 weeks it is by the medical abortion, 7 to 15 weeks it is by suction evacuation, and more than 15 weeks it is by the prostaglandins. So this is also important. Less than 7 weeks we will go by the drugs, right? And we'll go by the drugs, and 7 to 15 weeks we'll go by the suction evacuation, and more than 15 weeks we'll go with the prostaglandin, more than 15 prostaglandin. Okay, then we come further to the medical abortion, that is WHO or ACOG recommendation. Medical abortion can be done up to 9 weeks or 63 days, that is in India. Medical abortion is done up to 7 weeks. आगे चलते हैं मेडिकल अबॉर्शन में, दैट इज WHO ACOG रिकमेंडेशन, दैट इज मेडिकल अबॉर्शन कैन बी डन अप टू 9 weeks, दैट इज 63 days. In India, medical abortion can be done up to only 7 weeks. And the success rate is very high. 7 weeks, like even if you are in first month knowing कि first 2 months में you are knowing that yes the baby is there and the lady is pregnant, you can easily go for the medical abortion. The WHO and ACOG recommendation tells that medical abortion can be done up to 9 weeks, that is 63 days. In India, the medical abortion can be done up to 7 weeks, right? And before initiating the medical abortion, of course, if you are initiating the medical abortion, like with the drugs, you should make sure that it is intrauterine pregnancy, and the patient should be willing to do that, like the patient should be compliant, patient should be willing to do that and compliant, and it should be an intrauterine pregnancy that should be confirmed on ultrasound.
नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, उसने हमें ये बताया कि प्रोटोकॉल फॉर द मेडिकल अबॉर्शन कौन सा होता है। अगर हमें ये पता है कि मेडिकल अबॉर्शन करना है, वो लेस देन 7 वीक्स ही किया जाता है और काफ़ी सक्सेसफुल भी होता है। पर सपोज़ अगर तुम 7 वीक्स से 9 वीक्स तक चले गए तब भी किया जा सकता है। अगर तुमने लेस देन 7 वीक्स पे करना है तो तुम क्या करोगे, फर्स्ट डे पे तुम ओरल मिफेप्रिस्टोन दे दोगे, ठीक है। मिफेप्रिस्टोन, इट इज़ एक्चुअली एंड एंटी प्रोजेस्टेरोन कंपाउंड विच किल्स द फीटस, ठीक है। ओरल ऑन डे 1 यू आर गिविंग ओरल मिफेप्रिस्टोन, हाउ मच, 200 mg 1 tablet. It is actually killing the fetus. It is RU486, RU486, or it is oral anti-progesterone. Okay, on first day you are giving RU486. This is anti-progesterone and this is actually killing the fetus. And this is oral mifepristone, that is 200 mg, ठीक है। फिर ऑन डे 3 की अगर हम बात करें, ऑन डे 3 वी हैव 400 माइक्रोग्राम, दैट इज़ 2 tablets ऑफ मिसोप्रोस्ट, दैट इज़ वेजाइनली और ओरली। ऑन डे 3 वी हैव 400 माइक्रोग्राम, 2 tablets ऑफ मिसोप्रोस्ट वेजाइनली एंड ओरली टेटेरो, ओके। डे 2 पे हम देंगे 400 माइक्रोग्राम ऑफ मिसोप्रोस्ट, 2 टैबलेट्स, वेजाइनली भी दे सकते हैं, ओरली भी दे सकते हैं। मिसोप्रोस्ट, प्रोस्ट मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, सबसे पहले तो प्रोस्टाग्लैंडिन है तो ये यूट्राइन की कंट्रैक्शन को इंक्रीज कर देगा, और उससे क्या होगा कि जो हमने डे 1 पे दी थी जिसने फीटस को किल किया था, ये फीटस को बाहर निकाल देगा, डेड फीटस बाहर आ जाएगा। और दूसरी ये चीज़ होती है कि ये टेट्रोजेनिक भी होता है, ठीक है। एंड इट्स जस्ट कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग सर्जरी एज इट कैन कॉज and result in Mebius syndrome. Within 1 to 2 days of the patient will experience heavy bleeding. Okay, 1 to 2 days patient will experience heavy bleeding. So day 15 to ensure the process is complete, and in day 15 99% is complete, and if you see anything abortion is not complete, you can go for dilatation and curettage to complete it. At 7 to 9 weeks on day 1 you will see oral mifepristone which is 200 mg. On day 3 800 microgram, 4 tablets of vaginal misoprost. Okay, and स्टार्ट हमने मिफेप्रिस्टोन से ही करना है जो बच्चे को मारेगा। एंड डे 3 पे हमने 400 माइक्रोग्राम कर देना, को डबल कर देना, दैट इज़ 800 माइक्रोग्राम कर देना, 4 टैबलेट्स ऑफ वेजाइनल मिसोप्रोस्ट कर देनी है। डे 15 पे क्या करना है, टू इंश्योर द प्रोसेस ऑफ अबॉर्शन इज़ कम्प्लीट। उसके बाद अगर नहीं कंप्लीट तो डायलिटेशन क्योरेटाज कर सकते हैं। सक्सेस रेट इज़ 95%। एंड अगर हमें सक्शन इवैक्यूएशन करनी पड़ रही है, लाइक द प्रोसेस ऑफ अबॉर्शन इज़ नॉट कम्प्लीट, तो वी कैन डू इट बाय द कार्बन कैनुला। 4 to 12 number is written on the cannula. It indicates the diameter. Number of carbon cannula correspond to the week of pregnancy and should be less. It should be 1 less. Okay. जितनी वीक ऑफ प्रेगनेंसी उस पर शो हो रही है और जितनी उससे है कार्बन कैनुला उसका 1 नंबर छोटा ले लो। अगर ये 6th वीक चल रही है तो 5 नंबर वाला कार्बन कैनुला ले लो। फिर कैनुला को सक्शन मशीन के साथ ऐड करो, वो अपने आप ही 600 mg Hg प्रेशर का होता है, वो फीटल पार्ट्स को सक कर लेगा। बिफोर पासिंग द कार्बन कैनुला इंटरनल नोज शुड बी डायलेटेड, और वो कैसे डायलेट करते हैं, बाय हिगार डायलेटर। इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, सबसे पहले तो ये है कि यूट्राइन की परफोरेशन हो सकती है, ठीक है। जैसे हम पहले डायलेट करने पड़ेगा उसका इंटरनल लॉस, ठीक है, तो हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। While doing suction evacuation, serious injury can also be done, like what if the cannula remains inside, ठीक है, it might perforate the gut also. Then in such cases laparotomy has to be done immediately, right? And another method was menstrual regulation, in which we are using 3 weeks after the missed period, that is after the 7 weeks of amenorrhea. 7 weeks is around after a missed period, that is 7 weeks of amenorrhea. 3 plus 2 is 5. Okay, I don't know what kind of calculation they have done. 7 weeks of period of gestation.
2 हफ्ते बाद होगा तो उसके 3 हफ्ते बाद, आई डोंट नो। इन रूरल एरियाज़ की अगर हम बात करें तो मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन होती है यूजिंग 60 ml ऑफ द सिरिंज। 6 to 12 mm कैनुला होता है, प्रेशर इज 660 mm of Hg and it is used up till 12 weeks. It does not require electricity and is best for the rural settings. अगर हम मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन की बात करें तो मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन तब की जाती है जब 7 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी हो चुके हो, ठीक है। इट इज़ डन विद इन 3 वीक्स ऑफ द मिस्ड पीरियड, दैट इज 7 वीक्स ऑफ एमिनोरिया यूजिंग ए 50 ml syringe, दैट इज द पीरियड ऑफ जेस्टेशन। इन रूरल एरियाज़ की अगर हम बात करें तो मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन की जाती है, सिरिंज होती है, ठीक है, और सिरिंज से हम उसको मैनुअली इवैक्यूएट कर लेते हैं, उसको पुश बैक कर लेते हैं, ठीक है। इन 60 ml syringe क्या प्रेशर ऑफ 660 mg ऑफ Hg होता है एंड इज़ यूज्ड अप टिल 12 वीक्स। तो बेसिकली हम वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं, वैक्यूम से उसको पुश बैक कर रहे हैं। इसमें भी सेम ही प्रेशर है जो कार्बन कैनुला का प्रेशर है, उसमें था 600, इसमें उससे ज़्यादा है 660 mg, और बस उसको पुश बैक कर रहे हैं और एंड इट इज़ यूज्ड अप टिल 12 वीक्स। उसके बाद नहीं यूज़ कर सकते इसको, 12 वीक्स के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। अगर हम आगे बात करें तो हमारे प्रोस्टाग्लैंड कौन से होते हैं, प्रोस्टाग्लैंड की अगर हम बात करें तो हमने याद किया था कि 1, 2 अल्फा और उसके एनालॉग्स, ठीक है। 1 में आएगा मीसोप्रोस्ट, 2 में आएगा डायनोप्रोस्ट एंड 2 अल्फा में आएगा कार्बोप्रोस्ट, और एक उसके होते हैं एनालॉग जिसमें हम कहते हैं जेमीप्रोस्ट। तो जितने भी प्रोस्ट है वो सारे प्रोस्टाग्लैंडिन हैं। एक चीज़ याद रखना कि कौन सा मीसोप्रोस्ट होता है ना, वो हमें सर्जरीज़ में नहीं यूज़ करना चाहिए। वाई? क्योंकि इट कुड लीड टू मोबियस सिंड्रोम। सर्जरीज़ में नहीं यूज़ करना चाहिए। तो अगर हम सी सेक्शन सर्जरी कर रहे हैं तो उसमें हम मीसोप्रोस्ट नहीं यूज़ करते, ठीक है। इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन, दैट इज़ फर्स्ट इज़ अ मीसोप्रोस्ट, जो हम ओरली और वेजाइनल टैबलेट देते हैं 200 माइक्रोग्राम टू 800 माइक्रोग्राम, ठीक है। मीसोप्रोस्ट 200 to 800 माइक्रोग्राम देते हैं 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर, और इसकी मैक्सिमम डोज जितनी हम दे सकते हैं वो है 4 डोज, ठीक है। और दूसरी है गिमीप्रोस्ट। गिमीप्रोस्ट कौन सा होता है? ये होता है मीसोप्रोस्ट का एनालॉग, जो कि है वेजाइनल पीसरी, मतलब इसको वेजाइना के थ्रू ही यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ एक मीसोप्रोस्ट है जिसको हम ओरली भी यूज़ कर सकते हैं, बाकी सब वेजाइनली यूज़ होते हैं। जेमीप्रोस्ट वेजाइनली यूज़ होगा, मीसोप्रोस्ट वेजाइनली यूज़ होगा, डायनोप्रोस्ट वेजाइनली यूज़ होगा। अगर हम डोजेज की बात करें तो प्रोस्टाग्लैंडिन 1 कौन सी है, इट इज़ 200 to 800, ठीक है। जेमीप्रोस्ट इज़ 1000 माइक्रोग्राम एंड
2 जो सी है वो है 20 mg, डायनोप्रोस 20 mg एंड दिस इज 250 mg, ठीक है। और मैक्सिमम डोजेज जितनी दे सकते हैं मीजोप्रोस की याद कर ले, इट इज़ 4 डोजेज मैक्सिमम इसकी दे सकते हैं हम, और कार्बोप्रोस के 10 और गेमीप्रोस के 5। आई डोंट थिंक दिस आई हैव टू रिमेंबर, it's not that important, but prostaglandins are done during second trimester or beyond 15 weeks. If beyond 15 weeks you have to do, you will go for carbopros are basically for evacuating the baby out, and if it's first trimester then we are giving mifepristone. Mifepristone is actually prostaglandin RU486, and this is used for killing the fetus, and prost we are using for uterine contraction, and it will just take the baby out. And one other method that we can also use in the second trimester is extra amniotic eccatheterin. In this we are taking a Foley's catheter and placing between the membrane and the uterus, and we will pass the eccatheterin, that is 0.1% solution, and dosage is 10 ml into weeks of gestation. The max eccatheterin we can give is 0.50 ml. Foley's catheter should be allowed to be there for 4 to 6 hours, and we'll keep the Foley's catheter there for 4 to 6 hours, okay? And absorption will begin 12 to 14 hours after eccatheterin installation. Separate the membrane from the uterus, and membrane released by the prostaglandin uterine contraction and abortion. Okay, basically extra amniotic catheterin is removing the membrane from the uterus, or removing the fetus from the uterus. It will remove the membrane which is attached with the uterus, and will keep it there for at least 4 to 6 hours between the membrane and the uterus, and it will separate out, the membrane will separate out from the uterus in at least 1 to 2 days, and after 1 to 2 days we will give prostaglandin that will suck out, or you do the uterine contraction that will come out. So I think we need to recall the first trimester abortion includes medical abortion, suction evacuation, menstrual regulation, then we can manual evacuation or vacuum evacuation, suction evacuation, menstrual regulation, and by the drugs. And drugs we are using is mifepristone and misoprostol. Mifepristone and misoprostol. The prostone, mifepristone and misoprost. Remember, prost is there. Misoprost and mifepristone. ओके, सो फर्स्ट सेमेस्टर वाले हो गया। अब सेकेंड सेमेस्टर वाले हो जाते हैं। सेकेंड सेमेस्टर में कौन से थे? प्रोस्टाग्लैंडिन थे, सक्शन इवैक्यूएशन था, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन था, देन एक्स्ट्रा एमनियोटिक इकैथेरिन सॉल्यूशन था, एक्स्ट्रा एमनियोटिक इकैथेरिन 0.1% सॉल्यूशन था, एंड द लास्ट ऑप्शन वाला हिस्टेरेक्टोमी। अगर वो पूछेंगे बेस्ट मेथड, less than 7 weeks we need to go for medical method, and 7 to 15 weeks we are going for suction evacuation, and more than 15 weeks we are going for prostaglandin. Prostaglandin are 4 types, that is prostaglandin 1, 2, 2 alpha, right, and 1 analogs. We have the mesoprost and 1 like gamoprost, 2 is dynaprost, and 2 alpha is
12 is carbo first. Okay, as a gynecologist, the lady is coming to you, right? And one of your friend is coming to you, and now she's in very much trouble, and you as a gynecologist need to help that friend. She's telling that she has missed her periods and she went for the UPT and it's positive. So what, as a gynecologist, I will tell, okay, take 200 mg of mifepristone. 200 mg of mifepristone. It is actually a prostaglandin. Mifepristone, misoprostol. Remember, if it's mifepristone, टोन याद रखनी है, फिर से उसकी टोन है ना, वो ही उसके टोन को दबा देगी. So at less than 7 weeks you need to give 200 mg of mifepristone and tone will kill the fetus. उसके बाद 2 दिन बाद तो उसको कहेगी 2 दिन बाद का मिसोप्रोस्टोल खा ले. मिसोप्रोस्टोल प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है, वो फीटस को बाहर निकाल देगा. उसके बाद उसको कहें कि 15 दिन के बाद आना. 15 दिन के बाद तो चेक करेगी इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन है, कम्प्लीट है. अगर कम्प्लीट है तो सही है, अगर इनकम्प्लीट है तो तू सेक्शन इवैक्यूएशन से डायलिटेशन क्यूरेटाइज से उसके बाद निकाल देगी. डायलिटेशन क्यूरेटाइज करने से पहले तो हिगार डायलेट डालेगी. ऐसी सर्टन कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जैसे परफोरेट कर सकता है और परफोरेट कर सकता है और ब्लीडिंग हो सकती है. एंड यू नीड टू वेट एंड वॉच. एंड बस यही होता है. एंड इसमें हम हिगार डायलेटर में हम कौन सा यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं हिगार्स डायलेटर, जो इंटरनल्स को डायलेट करने में हेल्प करता है. उसके बाद हम उसके अंदर कार्बन कैनुला डालते हैं. कार्बन कैनुला जो होता है वो सक आउट कर लेता है उसको. उसके अंदर प्रेशर होता है कार्बन कैनुला के अंदर 600 mg. ठीक है. अब सपोज ये सब हो गया, उसकी कंप्लीट अबॉर्शन हो गया. अब तो उसको कहेगी चल अब तू चली जा. अब सपोज वो मेरे पास आती है आफ्टर 7 weeks और वो कहती है कि आई एम प्रेगनेंट, दैट नो व्हाट शुड आई गो डू. आई विल टेल okay, let's do suction evacuation, because in the second trimester suction evacuation is no, it's 7 to 9 weeks. Okay, it's 7 to 9 weeks. Firstly I'll give her the oral mifepristone. It will count to that tone. Okay, first I'll give oral mifepristone, that is 200 mg. उधर भी 200 mg था, पर उसके बाद हमने जब सेकेंड डे पे वो आई तो मैंने उसको 400 mg ऑफ मिसोप्रोस दिया. पर अब जब 7 to 9 weeks हो गए तो मुझे पता है मिसोप्रिस्टोल थोड़ी सी हायर अमाउंट में चाहिए, तो मैं उसको क्या कहूँगी 400 mg की मत ले, 4 डोजेस लेनी है तो तू 800 माइक्रोग्राम ले. 800 माइक्रोग्राम 4 टैबलेट्स ले, और ले भी विजाइनली. ठीक है. और वो भी विजाइनली या ओरली ले सकती है. और जब वो लेगी तो वो उसके बाद वो डे 15 पे हमें चेक करना है कम्प्लीट हुआ या नहीं हुआ. अगर उन्हें कंप्लीट नहीं हुआ तो पहले हिगार डायलेट करके इंटरनल्स कर डिलाइट करो, फिर कार्बन कैनुला डालो, फिर उसको सक आउट करो. डायलिटेशन क्यूरेटाइज भी तुम कर सकते हो. एक चीज़ याद रखना कि जब भी तुम अगर सी सेक्शन कर रहे हो तो मिसोप्रोस्ट कभी नहीं देते. क्यों? क्योंकि अगर मिसोप्रोस्ट दे दिया तो इट वुड लीड टू मोबियस सिंड्रोम एंड इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग सी सेक्शंस और ड्यूरिंग सर्जरी. Okay. And if you're knowing that she's coming after the 9 weeks, if she's coming after the 9 weeks, then I will have to give only misoprost, prostaglandin ही दूंगी क्योंकि that is the best method. Okay. menstrual regulation कर सकते हैं at the 7 weeks of pregnancy. कैथरीन में हमने पढ़ा था 46 hours एंड 23 years के अंदर वो बाहर आ जाएगा. इसे 2 दिन लगेगा वो बाहर आने के लिए. Okay, so I've done with this topic. I think I need to go with the MCQs now. Let's do some MCQs.
Abortion. Abortion expulsion of fetus weighing more than 500 grams according to WHO. Before 20 weeks and above 500 grams. Patient medicine generally 4 and 6 weeks of amenorrhea IUPD with 6 weeks. मतलब उसको 1.5 महीना हुआ है IUPD पॉजिटिव है, प्रेग्नेंट है, पर उसको वेरिंग हो रही है. And the most common cause of this condition. Most common cause first trimester में कौन सा होता है? I thought it's idiopathic. No, it must be then chromosomal abnormality. First week में अब अगर abortion हो रहा है, most commonly because of the chromosomal abnormality, like autosomal trisomies or Turner syndrome is the single most chromosomal abnormality in miscarriages. Patient presented with spontaneous abortion at 7 weeks of gestation. Which of the following is least likely chromosome abnormality which can lead to this condition? Spontaneous abortion at 7 weeks of gestation हो रहे हैं, तो एक डाउन सिंड्रोम है जो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन नहीं कराता. गलत. लीस्ट लाइकली इज ट्राइसोमी 1. और टर्नर है वो जो सबसे ज़्यादा अबॉर्शंस कराता है. डाउन सिंड्रोम भी करा देता है, पटाऊ भी करा देता है, ट्राइसोमी 13, ट्राइसोमी 18 एडवर्ड भी करा देता है. द मोस्ट कॉमन इज फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन ट्राइसोमी and the least common is trisomy 1. I thought it is डाउन सिंड्रोम, क्योंकि डाउन सिंड्रोम में प्रेगनेंसी कंटिन्यू करती है, पर डाउन सिंड्रोम भी अबॉर्शन का रीज़न है. अगर वो पूछ रहे हैं कि लीस्ट कॉमन होती है ट्राइसोमी 1, जिसमें अबॉर्शन के चांसेस लीस्ट कॉमन होते हैं. Woman with 6 months of amenorrhea has UPT positive. Finding was seen on transabdominal ultrasound, which is the most probable diagnosis. Gestational sac तो मुझे नज़र आ रही है. ठीक है, अब वो कह रहे कि is it a singleton pregnancy, missed abortion, anencephaly or molar pregnancy? Okay, is there any? I don't see any. See Gola and then these two things here. Is it a missed abortion? I have no idea. It could be anencephaly. Anencephaly के कौन से signs थे? I don't remember. It's a missed abortion. Okay, why? Because it is an empty gestation sac. It is missed abortion before 12 years. Gestation, entire ovum is covered by the chronic villi, giving rise to gestation sac. Missed abortion, like the lady is not even aware that the baby is dead. This is an empty gestation sac. Normal, okay. Normal pregnancy में okay. There would be a ring inside. You need to remember that. There would be a ring inside. That ring would be the gestational sac inside. Okay. This is the gestational sac. Gestational sac is present there. But in that gestational sac, you will see a yolk sac. If the yolk sac is present, that ring is present. That ring is double decimal sign. If double decimal sign is present there, right, that means a yolk sac is present there, means it is. And if you see only a black hole, that means it is an empty gestation sac and it is a missed abortion. Okay, you are examining a private gravida with complete abortion. Which of the following findings would you not expect?
उसका कंप्लीट अबॉर्शन हो चुका है. यूट्रस स्मॉलर यस. ओपन सर्वाइकल नो. यूट्रस फॉर्मिंग हो सकता है, हो सकती है. अगर तो कंप्लीट अबॉर्शन हो चुका है तो सर्वाइकल ओस क्लोज हो जाएगी, वो ओपन नहीं होगी. और जेस्टेशन सैक भी तुम्हें नज़र नहीं आएगा. यू विल सी एम्प्टी जेस्टेशन सैक. You will see empty uterus. You will not see any. Okay, this is a uterus, and you're not able to see any gestation. Nice. Now it's going inside my head. Recurrent miscarriages is a loss of. Recurrent miscarriages. More than 3 before 20 weeks, I think. More than 3 pregnancy loss before 20 weeks, or more than 500 grams. Which of the following condition does not usually cause recurrent miscarriages? Recurrent miscarriages कौन नहीं करता usually? Infections नहीं करते, क्योंकि अगर एक बार इन्फेक्शन है वो सही हो जाएगी ना, तो दोबारा थोड़ी करेगी. Except syphilis. A primary guardian has a spontaneous abortion and on examination. अगर उसमें लूपस एंटीकोगुलेंट पॉजिटिव है, एंटीकार्डियोलिपिन पॉजिटिव है, एपीटीटी प्रोलॉन्ग्ड है, ठीक है, तो ऑब्वियसली इट इज एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम. दैट इज द रीजन ऑफ रिकरेंट मिसकैरेजेस. दो सेकंड, ये मुझे समझ नहीं लगा. अगर डिस्ट्रॉस वुमन कम्स टू द कैजुअलिटी एट 18 weeks of gestation and is complaining of vaginal bleeding, and she has a history of 2 early pregnancy losses, and ultrasound reveals the absence of fetal cardiac activity, which of the following investigation need not to be done in this patient? Need not to be done. Okay, need not to be done. I know increase in prolactin can also lead to pregnancy loss. Decrease in progesterone can also lead to pregnancy loss. And which of the following investigation is not need to be done? Serum prolactin level हमें करना चाहिए. Saline infusion sonography कर सकते हैं to know about ये आवाज़ कहाँ से आती है? छोड़ो. एंड पेरेंटल केरोटाइपिंग कर सकते हैं अगर हमें ये कि क्रोमोसोमल अबनॉर्मैलिटी के कारण तो नहीं हो रहा, पर एक्सटेंसिव इन्फेक्शन वर्कअप तो नहीं करेंगे क्योंकि ये रिकरेंट है ना. 2 प्रेगनेंसी लॉस हो सकती है तो इन्फेक्शन थोड़ी होगी. A pregnant lady with a history of recurrent abortion is now diagnosed to have what would be the best treatment for her? Aspirin plus heparin.
these two organ, ये तो मुझे false लग रहा है. APLS is a rapidly progressive thromboembolic disease. Yes. Infections can trigger it. Yes. क्योंकि it is a kind of autoimmune disease. And okay. This is a catastrophic APLS. Wow, nice. This should be written down. This is something new information. अगर वो दे कह रहे हैं catastrophic APLS syndrome, that means this is a complication of APLS syndrome. बहुत जल्दी खो जानी है मैं. Catastrophic. Right here.
इनके पेन है ना गंदा चलता, पेन ने जोर लगा के लिखना पड़ रहा है। Next question. This is Asher's son, not Asherman. सर्वाइकल इनकम्पेटेंस है तो पेनफुल वजाइनल ब्लीडिंग नहीं होती, पेनलेस होती। रिपीटेड मिड ट्राइमेस्टर, पेनलेस सर्वाइकल डायलेटेशन यस, रिपीटेड थर्ड ट्राइमेस्टर नो, ब्लीडिंग पर वजाइनल नो, सेकंड ट्राइमेस्टर। The following increase the risk of developing cervical incompetence. सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस किस किस चीज़ों में हो सकती है? आई थिंक ट्विन प्रेगनेंसी में रिस्क हो सकता है, जेंटल ट्रैक इन्फेक्शंस में हो सकता है। 2 and 4 history of MTV and stone. It's 1 to 1.5. In utero exposure to DES during pregnancy by cornate uterus can increase the risk of cervical incompetence. ट्विन प्रेगनेंसी तो समझ आते क्योंकि वो उसको ज़्यादा खींचेगा, ठीक है।
बाइकॉर्नेट यूट्रस में क्या होगा? बाइकॉर्नेट 2 यूट्रस हैं, उस वजह से भी हो सकता है सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस की। वो जितना होना चाहिए था उतना नहीं है, वो उससे बड़ा है, ठीक है, क्योंकि 2 कॉर्नर हैं यूट्रस के, ठीक है। एंड इन यूट्रो एक्सपोजर टू DES, पता नहीं अभी क्या है, 1 to 1.5। Transvaginal ultrasound of pregnant women is given below. What are the cutoff values of the parameter marked A and B for the diagnosis of cervical incompetence? Transvaginal ultrasound of pregnant women is given below. This is the uterus which you're seeing. Nice. You're seeing the uterus like this, and this is the uterus, and this is the body of the uterus. यहाँ पे होगी फैलोपियन ट्यूब, और ऐसे तुम्हें दिखेगा क्योंकि वो लेटी हुई है, तो ये यूट्रस है, ठीक है। तो इसमें हमें ये पता चल रहा है कि एक फनल बनी हुई है, ये सर्वाइकल लेंथ है, ये सर्विक्स है उसका, और ये जो यूट्रस है यहाँ पे फनल बना हुआ है, फनलिंग ऑफ द यूट्रस है। तो अगर हमें फनल पता चल रहा है, ये सर्वाइकल लेंथ है, ठीक है, यहाँ पे फनल है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट पे फनलिंग हुई है, ओके। And then parameter marked A is funneling of the internal os, and the parameter marked B is the cervical length. It is a funneling of internal os, and it is a parameter marked B is the cervical length. Funneling of internal os is more than 1 centimeter, and cervical length is more than is diagnosis of cervical incompetence of the transvaginal ultrasound. Okay, if we see that funneling of internal os is more than 1 centimeter. Funneling of internal os is more than 1 centimeter, and the cervical length is more than 25 mm. 1 centimeter 25 mm से लेस है। सर्वाइकल लेंथ जो सी 25 mm से लेस हो गई है, मतलब वो छोटी हो गई है, और वो फनलिंग हो रही है उसकी। तो फनल जैसे वो बड़ा ही हो जा रहा है, और वो मोर देन 1 सेंटीमीटर हो गया, और वो लेस देन 25 mm हो गई है, ठीक है। थोड़ा सा इमेजिन कर, ये थोड़ा बड़ा हो रहा है, फनल बन रहा है, और ये कम हो जा रही है, 25 mm से कम रह गई है, और ये बड़ा हो रहा है, और ये 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ा हो गया, और यहाँ पे फनलिंग होगी। तो दिस इज सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस ऑफ द इंटरनल लॉस, ओके। 26 presence 6 weeks of ovarian positive UPD have passed. Is too significant for 2. सर्वाइकल लेंथ लेस देन 20 mm है, मतलब है 2 मीटर में सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस है। प्रोफिलेक्टिक सर्कुलाज करना चाहिए 12 वीक्स, क्योंकि मुझे पता है कि उसकी प्रेजेंटली पहले भी प्रेगनेंसी लॉस हुई है, और सर्कुलाज कब करना है? 12 to 14 वीक्स, याद रखना। प्रोफिलेक्टिक सर्कुलाज करेंगे 12 to 14 वीक्स। सर्वाइकल सर्कुलाज करेंगे जैसे ही फर्स्ट ट्रिमेस्टर ख़त्म होगा, तब जैसे ही फर्स्ट ट्रिमेस्टर ख़त्म होगा सर्वाइकल सर्कुलाज कर दो।
A patient with cervical insufficiency is supposed to have a McDonald procedure, which is the following indicated for this surgery, which is not contraindicated. Placental obstruction contraindicated, premature obstruction contraindicated, cervical contraindicated. Less than 20 weeks of gestation, it's not contraindicated. Contraindicated 24 weeks से ज़्यादा है, एक्टिव लेबर है, एक्टिव वजाइनल ब्लीडिंग है, अब्रप्शन प्लेसेंटा है, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है, कोरियम मैटिस है, 24 वीक्स से ज़्यादा है, मतलब वो थर्ड ट्रिमेस्टर में पहुंच गया है, तो अब तो नहीं कर सकती ना सर्वाइकल सर्कुलर। अगर उसको करना होता तो वो पहले ही कर लेती। मतलब करना है तो फर्स्ट ट्रिमेस्टर के आखिर में करो, अराउंड 12 to 14 weeks. Collapse membrane, vaginal spotting, fetal death, in utero, chorioamnitis, all that. Chorioamnitis is a post-operative complication. I don't think so. कोरियमनाटिक मैकडोनल्ड सर्कुलर करने से कोरियमनाटिक नहीं हो सकता है। जब हम सर्वाइकल सर्कुलर करेंगे 2 प्रोसीजर, एक मैकडोनल्ड और एक मॉडिफाइड शिरोडकर। जब मॉडिफाइड शिरोडकर यूज़ करते थे हम दोनों में नॉन मर्सिलिन टेप यूज़ करते हैं, ठीक है। जिनसे मैकडोनल्ड प्रोसीजर होता है इसमें पोस्टिंग सूचर्स होते हैं द लेवल ऑफ इंटरनल नर्व्स।
ठीक है। और जो मॉडिफाइड स्टेरॉइड का प्रोसीजर होता है उसमें मर्सलिन टेप यूज़ की जाती है, जिसको हम सबकुटेनियसली पास करते हैं थ्रू द इंटीरियर इंसिजन एंड डाइट प्रोसीजरली। ट्रांसवर्स एंटीरियर इंसिजन देंगे, और उसको टाइट कर देंगे पोस्टीरियरली, एंड वो टेप लगा देते हैं मॉडिफाइड स्टेरॉइड का प्रोसीजर में। बट मैक्डोनल प्रोसीजर में हम पर्स स्ट्रिंग सूचर्स होते हैं वो लगाते हैं, और मर्सलिन मटेरियल इज मॉडिफाइड स्टेरॉइड का। 20 ईयर ओल्ड है। So the following is not contraindication for this. ये नहीं मुझे पता था कि तुम मेडिकल अबॉर्शन तभी कर सकते हो अगर तो उसके अंदर एक आईयूडी प्रेजेंट है, तो तुम मेडिकल अबॉर्शन नहीं करोगे विद द ड्रग किलिंग द फीटस एंड मेकिंग इट आउट, क्योंकि आईयूडी ऑलरेडी अंदर प्रेजेंट है। सेकंड थिंग, अगर उसको कोगुलोपैथी है सेकंड थिंग, अगर उसको सीवियर एनीमिया और कोगुलोपैथी है तो भी तुम ये चीज़ नहीं करोगे। अगर वो लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी भी है तो भी तुम नहीं करोगे। अगर उसको कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, सीवियर रीनल, पल्मोनरी कोई सीवियर डिजीज़ है, हार्ट की, लंग की, किडनी की, तो भी तुम नहीं करोगे। अगर इनहेरिटेड पॉलीफायरिया है तो भी नहीं करोगे। अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है तो भी नहीं करोगे। सक्शन एंड इवैक्यूएशन कब तक ही कर सकते हैं? 15 वीक्स। पर मैंने तो पढ़ा ही है 15 वीक्स तक टेस्ट मेथड सक्शन इवैक्यूएशन। टेन 7 to 15 वीक्स तक सक्शन इवैक्यूएशन बेस्ट मेथड है। और यहाँ पे ये लिख रहे हैं कि सिर्फ 12 हफ्ते तक ही सक्शन इवैक्यूएशन कर सकते हैं। अब मैं किसकी बात मानूँ? दोनों इसी की है। मतलब ये चीज़ याद रखना कि 18 से कम नंबर कौन सा दिख रहा था तुझे? 12, मतलब 15 से कम था, या तो 15 होना चाहिए था या तो 12 होना चाहिए था, तो 12 मार्क करती। कौन सी एंटीबायोटिक तुम दोगे उसको?
amoxicillin 250 mg orally. No, you will give doxycycline as a preferred drug for the post-abortive antibiotic prophylaxis. Oral doxycycline 100 mg is given 1 hour before surgical evacuation, 2 mg given after the procedure is complete. The doxycycline is the prophylactic antibiotic given. Doxycycline जिसमें प्रोस्ट है मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन्स है. एट्थ वीक ऑफ प्रेगनेंसी में है मतलब वो 7th वीक क्रॉस कर गई है तो 800 माइक्रोग्राम्स होने चाहिए. Which of the following is false regarding the method of MTP? मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन में पेन होगी. कुछ नहीं, बड़ा अजीब सा था. जौन सा मेडिकल मेथड देंगे उसके बाद उसको ब्लीडिंग होगी, काफ़ी ब्लीडिंग होगी, याद रखना. पेन भी होगी, ब्लीडिंग भी होगी. हो सकता है वो इनकम्प्लीट अबॉर्शन हो. अगर हम मेडिकल मेथड का कंपैरिजन करें सर्जिकल मेथड्स के साथ, मेडिकल मेथड compared to surgical abortion has more pain, vaginal bleeding, there can be incomplete abortion, so requires multiple visits. Broad and doses from PHC with a complaint of fever, no.
सेप्टिक अबॉर्शन, और सेप्टिक अबॉर्शन में कौन सा ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा होगा? इकोलाई. दिस इज केस ऑफ इज नॉट अ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इन द प्रेजेंट कंडीशन. वही मैं सोचूँ, मैं स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस कितना है, क्योंकि पस भी आ सकती है, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस भी हो सकता है, क्लोस्ट्रीडियम सॉर्डिडली भी हो सकता है. Okay, so the lady is coming who had abortion and now she's coming with pain and fever and purulent vaginal discharge. That means there's something kind of bacteria present there. So it could be streptococcus pyogenes, Clostridium perfringens, Clostridium sordidale. Which of the following is not a risk factor for stillbirth? वाओ, कहता है कि स्टिल बर्थ हो सकता है अगर मैटरनल डायबिटीज़ होवे, उन्हें बहुत सारे ड्रग्स खादी हो सकता कभी कभी ART ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ स्टिल बर्थ. बट अगर ਉਹਨੂੰ सीजर ਸੀਗੇ तो ਉਹਨੂੰ ट्रीटमेंट नहीं मिली, दैट डजंट मीन कि बेबी खराब होएगा और बेबी स्टिल बर्थ होएगा. सीजर्स ਦੇ ਨਾਲ बड़ी अजीब चीज़ हो, कहते कि सीजर्स ਦੀ ट्रीटमेंट ਦੇ ਨਾਲ बेबी ਨੂੰ इफेक्ट हो जाएगा, बट जो सीजर नहीं ट्रीट करोगे तो इट इज़ नॉट अ रिस्क फैक्टर फॉर स्टिल बर्थ. Young female has a history of spontaneous abortion. She has had amenorrhea since then. Her FSH now is 16 MIU per ml. Which of the following can be the cause for her amenorrhea? नॉर्मल FSH लेवल इज़ 4 to 25 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर. ठीक है, एंड FSH इज़ नॉर्मल, दैट मीन्स इट इज़ ग्रोइंग. ठीक है,
and she had recurrent spontaneous abortion, right? And after that, she's still having amenorrhea, although follicle stimulating hormone is normal, LH is normal. So what could be the condition? One of the condition could be that uterine synechiae is there, because of that the blood is not coming out. This is known as Asherman syndrome. Basically because of recurrent spontaneous abortions or dilatation and curettage, like incomplete abortions or all that, you will check, and these can lead to damage to the basal layer of the endometrium, leading to scarring and fibrous deposition, and subsequent uterine synechiae can also be formed.